welcome to Q Data Structure series, and today we will study about priority queue and DQ in detail. So let's start with the topic. So first topic is obviously priority queue. Now what is a priority queue? Priority is itself signifying that some of the elements are, they are, with compared to other elements, they are given more priority. So there is a comparison in the word itself. I want to say that there is a comparison in this word itself. So whenever you have a queue, there is some priority associated with some of the things that just make it a priority queue. So what is a priority? You can just scroll down a little bit and you can see a picture there in which there is shown the arguments and the operation operated upon that argument. So for example, in the English alphabets you have, the more the A star value of that character of English alphabet, more is its priority. So for example, if you are inserting P is at the first movement the queue is empty. So P is just inserted as it is. The next we have Q. Now Q is obviously having more priority, so it is enqueued after P. Now when we want to enqueue E after P and Q are already enqueued, so at that moment we cannot enqueue E at again after Q only, because then the sense of priority queue will be vanished. Priority means we have to give priority while enqueuing the element. So we will enqueue E before P because the priority of E is less than P and less than Q. Okay, so E comes here at this position. Also, at any moment, for example, you want to remove the element with the maximum priority. So in this case, the element with the maximum priority is Q because it is having the maximum A star value. Okay, so the DQ, so the Q will be DQ'd. Okay, we have removed Q from the Q character from our Q container. Okay. So, likewise, whenever we talk about priority queue, we can of integers, we can assign the priority that more the value of that integer, more is its priority. Now, here only comes two things. One is ordered priority queue, and something else is called as unordered priority queue. Okay, so let me try it once again. I think now I'll be able to draw. Yes. So now, for example, you have this queue. Okay. So, for example, you have some elements. Let me decrease the size. For example, you have the elements 1, 2, 0. Just adjust this time. Then 5. Then 3. Okay. So just consider these elements for instance now. Okay, now what we'll do, we have first one, we have one, now one will be enqueued here only. Then we have two, two is obviously having more priority, so 2 will be enqueued here. Next we have 0. Now 0 is having priority less than 2 and even less than 1. So what we'll do, we'll first DQ, let me decrease the size. We'll first DQ 2. Then we'll again compare it with 1. Now 1 is obviously also greater than 0. So what we'll do, we'll enqueue 0, then we'll enqueue 1, then we'll enqueue 2. We give correct position to 0. Next we have 5. We can enqueue 5 as it is because it is having the maximum priority. Next we have is 3. So we cannot enqueue 3 here because the priority of 5 is greater than that of 3. So what we'll do, we'll just pop out 5 from here.
We'll pop out 5. We'll, you know, we'll push it. We'll push it after pushing 3. So we'll first push 3 here and then we'll push 5. Okay, so this is something what is called as ordered priority queue. Okay, that means the elements that we are enqueuing in our queue are arranged. They are arranged in a particular order, either in ascending or in descending order. And something we have a thing called unordered priority queue. What happens in unordered priority queue? Yes, what will happen in this case? We'll just enqueue the elements as it is. Okay, we will not check the order of the elements that, for example, in the case above in the ordered priority queue, we were looking at each element and we were then comparing. But in this case, in the unordered priority queue, we will just include the elements as they are, like 1, then 2. Just ignore my handwriting because I'm unable to write with the mouse. Mm. Here comes 2. Then we have 3. No, then we have 0. Excuse me, please. Yes. Here 0 will come. Then 5. And then 3. I hope you can adjust with my handwriting today. Okay. So this case we are having all the priorities that we have, you know, we have considered. But now you will say ki, if we are entering the elements as it is, now this is again our linear queue only. What is the difference between this and our linear queue that we have? So what happens in this case is that whenever you are dequeuing any element, you will dequeue it with respect to their priority. For example, if I want to dequeue element from this priority queue, I will not dequeue just one. I will DQ 5. Okay. And after 5, 3 will have the maximum priority. So after 5, 3 will be DQ'd. So it is not just that we are DQing the elements also in that way. So this here comes the difference. So this is called as unordered priority queue. Okay, now I have, you can open the PDF. I have written the code for this ordered priority queue, and I expect from all of you that you will write the code for unordered priority queue yourself. Okay, this is ordered, and you have to write code for unordered yourself. Let me explain this code to you. In this code, what we have done, obviously, we just have to change our function for enqueuing the element. So whenever we are enqueuing the element, we'll check our data, and if our data is greater than the element already in the list, already in the queue, that means our the priority of the incoming element is greater. So what we'll do, we'll just shift the position of all the elements already in the queue by one position, and we will add and we'll push the element at that position. Okay, we'll push the elements at that position. The Whenever our whenever the priority is less than the element with the previous one, like we saw here in this case, that we were entering the elements until then, whenever when our the priority of the incoming element is less than the element before that in the queue. At that position we will enqueue the element. Okay, I hope this is clear to you. If this is clear, I think you can write the code yourself also, but for your convenience I have just written the code for you. You just have to shift all the elements already in the queue by one position.
Okay, so I think this you can write it. All the other functions, obviously peak function, NQ function, and all the other functions will remain as it is in the ordered priority queue. On the other hand, in the unordered priority queue, all the other functions are changed except for NQing the elements. Now, here comes another thing and a very important thing, which obviously every time whenever we are doing questions and whenever we want priority queue, we cannot write the full function for it. So what we'll do, we'll just we have a priority queue in SQL. It's a container, and it's very important. Obviously, we are blessed to have this because otherwise we we'll not be writing all the full code every time. So we have this. Now, what is the difference between this and the normal queue that you have? That in this you have only one pointer, that is top. You cannot access the element at the other pointer that you have in your normal linear queue, right? So in this you can access the top element, which is having, and in this case every time the the topmost element is having the maximum priority. So the queue is arranged in such a way that the element with the topmost priority comes at the top. Okay, and other functions you can see empty function, which will return 1 if the queue is empty, and it will return 0 if the queue is not empty. Then size will return the size of the queue. Then push will push the element, that is include the elements in the queue, and pop, that means it will pop the elements from the queue, that is dequeuing. I hope you will be able to understand this code after you just apply it. This is, and okay, this is how you declare a priority queue. Okay, priority underscore queue, and then in angular brackets you can write whatever the data type of the elements you want in that queue, and then its name. Okay, so you can write the code for all these functions, and you can apply it with while popping some elements and enqueuing some elements, and you can check to get the result. Okay, now let's solve a question. So you can come to AGIO. You can explain it to you here. Now, for example, you have an array of elements. I can take an example from here only. For example, you have 6, 8, 4, 5, 2, and then 3. Now what you have to do, you have to use all these elements of the array only once, and also you have to use all the elements. None of the elements should be left. You have to use all the elements of this array, and obviously the repetition is not allowed, and you have to find two numbers in such a way that their sum is minimum. Okay, now for example, you can take it like 3 plus 2, 5, 486, or 523 plus 486, or you can take any two-digit number, another four-digit number. But the required two minimum conditions are: you should take all the elements, and also you should not repeat any element. Okay, so what is the algorithm for it? What we will do, we will we'll just take the first, we'll enqueue all the elements in a priority queue. Mhm. So what you will do, you will enqueue all the elements in a priority queue. How the elements will look after entering them in the priority queue? You will have 2, then you have 3, then you have 4, then you have 5, then you have 6,
and then 8. I hope you can adjust with the handwriting because I'm not able to write with the mouse today. Okay, so what will happen? You will first take the alternate digits. That is 246 here. Okay, and the other element will also be the the other number will also be the alternate digits. In this case, it will be 3, then 5, and then 8. I think this 8 is much better. You can understand it, right? This is 8. Okay, so actually I'm not able to write it with a mouse today. So this will give you the minimum element, minimum sum of these two integers. Now, what happened in this case is what you have to do. You have to convert. Okay, so what method do you think that how can you access these two elements? How can you make these two elements, these two numbers? So what happens? You will say that we'll just take the top of this priority queue. Then we'll just keep on adding the numbers alternatively. At first you will take 8, then 5, then 3, then your number form will be 853. Now obviously you want the reverse of that, so you will reverse it using that method that you just change it, that the elements, right? That way you will just find the remainder, then you will add it in another number, and so on and so on. That's a long process. That itself takes order of n time complexity. Okay, now what solution I prefer here is, yeah, just I just introduced this question not just to tell you about the priority queue, but it's also about the other functions that are given here, like this. What here I have done, that my approach of solving this question is not like making like treating all the elements as an integer. What I did is I just converted all the numbers in a string, and whenever I was making a number, for example, in this case, whenever I want to make 853, obviously first you will make now. First you will take 8, then you will pop, then you will 6 in the other, then 5, then 4 in the other, and then 3. So what I'm taking all these not as integers but as strings. You can see here that I am while running a loop, I've taken a string O. O just signifies O, odd, the elements at the odd position, and E signifies the elements at the even positions. तो इधर O इज इक्वल्स टू C प्लस O ले लिया है ताकि हमारे पास स्ट्रिंग पहले ही रिवर्स्ड फॉर्म में आ जाए, राइट? तो जैसे ही मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग रिवर्स फॉर्म में आ जाएगी, तो आई हैव अ फंक्शन कॉल्ड STOI, दैट इज S2I, string to integer. Okay, now what does this function do is it converts the given string, the string we pass in the parameter, it converts that into an integer form. For example, here O is a string. At the end, when after this loop is finished, this O we get is a string. Now what do I want? I want the sum of this O and E. So I have to convert these numbers into integers. So what I will do, I will convert these E and O into integers, that is S, using S2I function. Now this function I want to introduce yourself and introduce you to this function. So I just selected this approach that you can pass E as a string and you will get the integer of that string. For example, if I passed 358 in the function STOI, then I will get 350 only, but in the integer form, not in the string form. So this really makes our question very easy and we are able to solve it. Okay, I expect you to solve this yourself first.
using all that, applying all that functions, at first retrieving the element, the topmost element, and then reversing the digits of that integer, and then adding the integer, and then giving the results, and then using this question, then you'll see the time complexity is also, less, and your your work and the number of lines of code is also reduced. Next we have is DQ in standard template library. Now obviously, many a times you would have in your mind ki why we are studying all these functions and all these containers. Obviously, for priority queue, you can apply many functions like merge sort, okay, bubble sort, and many other sort you can apply. That depends upon you. But what happens there is बहुत सारे केसेस में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमें रिड्यूस करनी पड़ती है, और प्रायोरिटी क्योंकि काफ़ी लिमिटेशंस हैं मर्ज सॉर्ट, और जब भी हम एरे के अंदर सॉर्टिंग या वेक्टर के अंदर सॉर्टिंग लगाते हैं, सो देयर आर मेनी लिमिटेशंस ऑफ प्रायोरिटी क्यू. बट द पॉइंट इज कि इन द केसेस in which we can apply it, so we should apply it. Okay, so that is why I am introducing you with all the concepts, so that there is no concept like कि ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था क्यों में. So I am introducing you with all the concepts. So just like these, another concept is DQ. So DQ is similar, very very similar to vector. In fact, vector gives you many other facilities also. There are some less facilities in DQ, but still I want you to understand that there is something like this in standard template library that's provided us. So DQ is a container which is, DQ is actually double-ended queues. Okay, so double-ended queues, in the name itself, it is signifying that what happens in double-ended queues is that you have two ends of a particular queue. That means in a normal linear queue, what you have is that you can add the element, or you can enqueue the element from the rear end, and you can pop the element or dequeue the element from the front end. But in this double-ended queues, what happens is you can push and pop the element from both of the side as you want. Okay, let's discuss the methods first. Methods, and then I think you will get to know about it. Here you have max size. Maximum size returns you the maximum size this container can hold. You can pass it into a function and print out the result what you get. Then is push front. In the normal linear queue that we studied, there is no उसमें कोई कुछ ऐसा फंक्शन नहीं था कि हम शुरू में डाल सके. क्यू का मतलब ही यही था कि हम लास्ट में रियर एंड पर हम लोग एन क्यू करेंगे. बट इन दिस केस we have a facility of pushing the element in the front, pushing the element at the back, popping the element from the front, and popping the element from the back. Okay, this is very important that what you are doing is ये आपको जो सारे functions है वो खाली आप एक जगह पर ही नहीं दोनों जगह पर लगा सकते हो. With the front you can access the front element, with back you can access the back, the rearmost element, the element at the rear pointer. Then empty will give you it's a boolean function will tell you whether your queue is empty, whether your DQ is empty or not, and size will give you the size of DQ at that particular point. Okay, now you can apply this. This is how. Let me show you this line number 16. This is how you declare a DQ. Okay, then you can push back, push front, push back, and push front, and also you can pop the elements from front and pop the elements from the back also. Okay, I hope you will you just write the code for this and run this code yourself so that you can see its application very nicely. Okay, so let's come to a question, a very good question. What the question is saying that you have an array and then integer a, and you have to find maximum for each contiguous subarray of size k. For example, let me take this case only. Let me not consider any other case. Consider this case in which say for example, in this case the window is of size k is equals to 3.
Okay. Now for k is equals to 3, I have to tell what is the maximum of a particular window size of k. What is the maximum value from that? For example, now in this case, what we have, the first window will be this of 3 elements. So maximum value is 8. So we will print 8. Okay. Now in our second window size, we have 8 obviously again. Then in our third window size, we have 5 as the maximum value. Then we will print 5. I'll just adjust, my writing. And in the other case also, you can see here, in the last case also, we have, in the last window size, we again have 5 as the maximum value. So we can print 5 here. Okay, now what happened? Just listen to me carefully, then I'll take another example and explain you. In this case, what will happen? What I'm telling you, the algorithm, I prefer that, just think of the algorithm first yourself, and then, listen to my approach, or the algorithm which I am going to tell you. Okay, so what you do first is that, first consider a loop of size k. That means run the loop for k is equals to 3 size, I is equals to 0, 1 to 3, 0 to 2, whatever you can take. So for that, create a DQ. And in that DQ, you have some fixed rules, that what you will do, that whenever your DQ is containing the front element, it will always be the maximum of that window size. For example, the window size for the window for 6, 8, and 4, for this, the DQ will contain the maximum value at the front position, and all other values at the other subsequent positions. Okay, but always at any moment of time, your queue will contain the maximum value of your, the array in the particular window size at the front position. Okay, the maximum value will be at the front position, and if there are more elements on the right hand side of the window size, then you can consider those the indexes of those elements in the DQ um, after front. Okay, let's understand this with the help of another example. वहाँ देखो अराउंड 1 2 3 1, और फिर उसके बाद है 4, और लास्ट में एक और ले लो 5. ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं सबसे पहले DQ बनाऊंगी. ठीक है, और DQ के अंदर मैं क्या करूंगी, मैं एलिमेंट्स को सबसे पहले, मेरी विंडो साइज यहाँ पे मान लो 3 है. ठीक है, तो 3 में से सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं इसका फर्स्ट इंडेक्स का 0th इंडेक्स का एलिमेंट सबसे पहले, मतलब पहले 0 ही डाल दूंगी, क्योंकि यही एलिमेंट अभी कोई ना तो इससे बड़ा है ना छोटा है. फिर उसके बाद मैं फर्स्ट इंडेक्स पर आऊंगी, मैं फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट को कंपेयर करूंगी जो फ्रंट एलिमेंट पर जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू से. तो 2 की वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, तो मैं 0 को क्या करूंगी, पॉप कर दूंगी यहाँ से, और 0 को पॉप करके मैं यहाँ पे पुश कर दूंगी 1. दैट मीन्स 2. जो मेरी वैल्यू है फर्स्ट इंडेक्स पे वो 2 है. ठीक है, उसके बाद मैं सेकेंड इंडेक्स पर आऊंगी. सेकेंड इंडेक्स पर मेरी वैल्यू जो है वो 3 है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको यहाँ पे पॉप कर दूंगी, और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 2. ठीक है, और अब मैं क्या कर दूंगी, 2 को कर दूंगी प्रिंट. दैट मीन्स जो मेरी फर्स्ट विंडो थी उसमें से जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स 2 है, 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 आएगा. मतलब मैं वैल्यू प्रिंट करूंगी, ये मैंने इंडेक्स लिख दिया था अभी. ठीक है, मतलब फ्रंट जो फ्रंट के DQ के फ्रंट के अंदर जो इंडेक्स है उसका एलिमेंट प्रिंट कर दूंगी. दैट मीन्स 3 आ जाएगा यहाँ पे. इतना क्लियर है? हाँ, जिसको भी डाउट था यार, अब देखते रहना अच्छे से. ठीक है, उसके बाद वैल्यू आई 1.
ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब सिर्फ सिंगल सिंगल इंडेक्स को कंपेयर या सिंगल एलिमेंट को इंडेक्स करूँगी, अब हर एलिमेंट को नहीं देखूँगी क्योंकि एक बार तो मेरी विंडो मैंने बना ली है, ठीक है, साइज़ 4 की। तो अब क्या करूँगी, जैसे मैं 1 को कंपेयर करूँगी, इसका इंडेक्स है 3, तो अब मैं इस वैल्यू को कंपेयर करूँगी इससे, तो वैल्यू छोटी आ रही है तो मैं कुछ पॉप नहीं करने वाली हूँ। मेरी अब जो विंडो चल रही है वो ये वाली चल रही है, ठीक है? हम्म। तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे पुश कर दूँगी। हाँ। ठीक है इतना। उसके बाद मैं क्या करूँगी, अभी जब मैं नेक्स्ट लूप पर आऊँगी, मतलब इस लूप पर आऊँगी, उसी टाइम मैं फ्रंट को फिर से प्रिंट कर दूँगी। फ्रंट को प्रिंट करूँगी तो मेरा 3 आ जाएगा। 3 आएगा, दैट मीन्स जो ये वाली मेरी विंडो थी इसका भी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी 3 है। हम्म। क्लियर है इतना? उसके हाँ। बाद मैं नेक्स्ट विंडो पर आऊँगी। नेक्स्ट विंडो कौन सी है मेरे पास? ये वाली है नेक्स्ट विंडो। हम्म। अब नेक्स्ट विंडो के लिए मेरे पास जो एलिमेंट को मुझे कंपेयर करना था 4 को, तो मैं 4 को कंपेयर करूंगी सबसे पहले थर्ड इंडेक्स से। तो थर्ड इंडेक्स छोटा है तो थर्ड इंडेक्स पॉप हो जाएगा। हम्म। मेरा चला गया क्या, या शो हो रहा है अभी स्क्रीन, मतलब एजीआई पर शो हो रहा है? हाँ, हो रहा है। ठीक है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रही है आज। हम्म। तो अब यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ नीचे, ठीक है? तुम लोग आज एडजस्ट कर लो प्लीज, आई विल टेक केयर ऑफ दिस नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पर 2 था और 3 पॉप हो गया है, हाँ। ठीक है? उसके बाद फिर मेरा जो 4 है, 4 को कंपेयर करेंगे सेकंड इंडेक्स, मतलब जो फ्रंट पर जो वैल्यू है उसके इंडेक्स से। तो 2 के हम्म। सेकंड इंडेक्स से चेक करेंगे, दैट मीन्स 3। तो 3 से करेंगे तो 3 भी छोटा है, तो ये यहाँ से फिर से पॉप होके यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। हम्म। ठीक है, 4 आ गई। अब तो कुछ एलिमेंट बचा नहीं, तो अब नेक्स्ट एलिमेंट पर आएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट पर आते ही हम 4 को भी क्या कर लेंगे, प्रिंट। प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, अब हम फिफ्थ वैल्यू पर आए, मतलब ये इस पर आए। तो हमने यहाँ देखा इसका इंडेक्स क्या है, 5। हम्म। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 को कंपेयर करेंगे 4 से। ठीक है, तो 5 ऑब्वियसली फिर से ग्रेटर है, तो यहाँ पे इसको हटा के 5 लिख देंगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट है नहीं तो लास्ट में 5 को प्रिंट कर देंगे। बीच में हमें सिर्फ 2-3 वैल्यूज, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो चीज़ ये है कि एक तो हमारा जो इंडेक्स, जो हमारी विंडो हम कंसिडर कर रहे हैं, उस उसका उसके अंदर जितनी वैल्यूज है, और अगर फ्रंट में जो हमारा इंडेक्स पहले से है वो उसके बाहर ना जा रहा हो, वो विंडो के साइज के बाहर ना जा रहा हो। हम्म। ठीक है, जैसे पहले वाले केस में हुआ था कि 10 जो वैल्यू थी वो सेकंड इंडेक्स पर थी और मेरी विंडो थर्ड इंडेक्स से शुरू हो रही थी, तो मुझे वो 10 जो एलिमेंट है या जो सेकंड इंडेक्स वैल्यू, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं उस टाइम पॉप फ्रंट कर दूंगी। हम्म। ठीक है, और मैं हर इसमें जो मेरा जो वो है कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्डर ऑफ एन से हल्की सी ज्यादा है, बट ऑर्डर ऑफ ऑब्वियसली एन इन टू के से तो काफी कम है। हाँ। तो वी कैन कंसिडर इट नियरली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन। हम्म। ठीक है, एक बार इसके कोड पर आ जाओ सब। कोड पर हाँ। आओ, लेट मी कम टू। तो इसमें लाइन नंबर 16 से देखो, नहीं 14 से देखो। 14th लाइन में मैंने क्या किया, 0 से लेकर के तक मैंने लूप चलाया। मतलब कि मैं सबसे पहले जो फर्स्ट विंडो है उसमें तो मैं हर एलिमेंट को कंपेयर करती हूँ, हम्म। है ना? तो उसमें मैंने सबसे पहले चेक किया कि अगर मेरी क्यू एम्प्टी नहीं है और मेरा जो पहले जो जो भी एलिमेंट को मैं चेक कर रही हूँ वो मेरा, फॉर एग्जांपल 1 के बाद जब 2 था तो 1 को पॉप करना था मुझे। तो दिस इज दैट थिंग कि जो मेरा ए आई है वो क्यू ऑफ बैक से अगर बड़ा है तो मुझे पॉप करना है। हाँ। ठीक है, और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली पुश करना है, तो पॉप करने के बाद भी मुझे उसे पुश करना है। ठीक है, तो ये जो मेरा पहला लूप लगा हुआ है 14th लाइन से लेकर 21st लाइन तक, वो ये लूप लगा कि पहली जो हमने विंडो कंसिडर करी थी के साइज की, जो मेरी फर्स्ट विंडो है उसके अंदर मेरे को हर एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा, तो वो कैसे होगा। हेलो?
हेलो यार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। हाँ रही है। ठीक है, कोई एक अनम्यूट कर लो यार प्लीज। हेलो। कर बोल बोल। हाँ, तो सबसे पहला जो लूप लिया हुआ है 14th लाइन से लेकर, वो ये लूप है कि जब मैं अपनी फर्स्ट विंडो को कंसिडर कर रही हूँ तो मैं उसके अंदर हर एलिमेंट को एक दूसरे के साथ कंपेयर करूंगी, या पहले वाले के साथ कंपेयर करूंगी कि मेरी जो वैल्यू है वो मेरे पास मैक्सिमम फ्रंट पर आ जाए, और अगर उसके बाद उसकी कोई छोटी वैल्यूज है तो वो उसके बाद आ जाए। ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट लूप चलाऊंगी। नेक्स्ट लूप में कहाँ से चलाऊंगी, के से लेकर, मतलब जहाँ पे मेरा छूटा था पहले, आई की वैल्यू जहाँ पर छूटी थी वहां से लेकर मैं लास्ट तक अब लूप चलाऊंगी, और हर वैल्यू के लिए एक लूप चलेगा। मतलब अब सिर्फ सिंगल वैल्यूज को मैं कंपेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं फ्रंट को ऑब्वियसली प्रिंट करा दूंगी, जैसे मैं तुम्हें पहले बोल रही थी कि फ्रंट के पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो फ्रंट को प्रिंट करा दो। फिर उसके बाद ये देखो, जो लाइन नंबर 25 पे लूप लगाया हुआ है, उस लूप का मतलब ये है कि हमारे जो फ्रंट के अंदर वैल्यू है वो मेरी विंडो साइज के बाहर तो नहीं जा रही है। जैसे हमारा पहले वाले केस में मैंने बताया था कि जो 10 वैल्यू जो थी वो मेरे लूप के, मतलब मेरी विंडो जो साइज थी 4 साइज की, उससे बाहर लाई कर रही थी वो, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो वो बाहर तो नहीं लाई कर रही, उसके लिए वो देखने के लिए हमने ये कंसिडर किया, ये वाला लूप चलाया कि क्यू डॉट फ्रंट जो है वो आई माइनस के से छोटा है, तो उसको पॉप फ्रंट कर दो, मतलब पहले वाली वैल्यू को हटा दो। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट थिंग हम क्या चेक करेंगे कि हम लास्ट वैल्यू को, जो क्यू डी क्यू के अंदर जो लास्ट वैल्यू थी उसको कंपेयर करेंगे हम उसके साथ, हमारी जो भी वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, अगर वो वैल्यू बड़ी है जो हमें जो चाहिए, तो हम डी क्यू में से पॉप कर देंगे, और अगर उससे छोटी है तो हम उसके बाद ही उसको पुश कर देंगे। ठीक है। ठीक है, एक बार मतलब देख लेना, अभी भी अगर नहीं समझ आया किसी को तो या तो अभी बता दो, अभी भी एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। अदरवाइज एक बार इसका जो एल्गोरिथम लिखा है और जो कोड लिखा है उसको एक बार ड्राई रन करके देखना, अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ। हाँ, अभी इसके बाद देखो दो क्वेश्चंस और वैसे मुझे डिस्कस कर, नहीं एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन डिस्कस करना था, सर्कुलर टूल, इसको मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूँ ताकि तुम लोग अपना बाद में अपना मतलब अपने आप करने की कोशिश करना, और अगर नहीं होता है तो आई डू इट। तो तुम्हारे पास क्या है, एक सर्कल में अरेंज्ड है काफी सारे पेट्रोल पंप। ठीक है, और करना क्या है कि हर पेट्रोल पंप के ऊपर ना तुम्हें वैल्यू दे रखी है कि उस पेट्रोल पंप के पास कितना पेट्रोल है। ठीक है, उतनी वैल्यू दी हुई है, और ये भी बता रखा है कि वहां से लेकर नेक्स्ट पेट्रोल पंप तक जाने का डिस्टेंस कितना है। ठीक ये है। बात समझ आई जो मैंने बोली कि काफी सारे पेट्रोल पंप्स सर्कुलर वे में अरेंज्ड हैं, और इस तरीके से अरेंज्ड है कि हर पेट्रोल पंप के ऊपर मेरे पास वो वैल्यू है कि जितना पेट्रोल उस पेट्रोल पंप के पास अवेलेबल है, और उस पेट्रोल पंप से नेक्स्ट पेट्रोल पंप तक कितना डिस्टेंस है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना था बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट आई एम नॉट एबल टू डू इट। तो अभी ये समझ आया अभी तक मैंने जितना बताया? हाँ। ठीक है, तो अब तुम्हें बताना है कि ये जो फॉर एग्जांपल 4 पेट्रोल पंप दिए हुए थे, तो तुम्हें बताना है कि मैं किस पेट्रोल पंप से शुरू करूं। फॉर एग्जांपल कोई ट्रक ले लो या कोई कार ले लो, कि मैं किस पेट्रोल पंप से शुरू करूं ताकि मैं जो सारे बाकी सारे पेट्रोल पंप है वहां से होते वक्त वापस अपने उस जगह पर आ जाऊं। ठीक है, मतलब मैं एग्जांपल यार ले लो, फटाफट एजीआई पर आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ सारे। आई होप सो आ गए। हाँ।
हाँ, अब देखो जो इसमें जो सबसे पहले मतलब जो मैंने वैल्यूज हर पॉइंट के लिए 2 वैल्यूज लिखी हैं, तो जो सबसे पहली वैल्यू है वो पेट्रोल बता रही है, और जो सेकंड वैल्यू है वो डिस्टेंस बता रही है कि कितना डिस्टेंस है नेक्स्ट पेट्रोल पंप तक का। ठीक है। ठीक है, ये 4 पेट्रोल पंप्स है, यहाँ 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 और यहाँ। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर मैं मेरी जो भी कार है या जो भी ट्रक व्हीकल है वो अगर इस पॉइंट से शुरू होता है, तो इस पॉइंट पे मेरे पास जो पेट्रोल आएगा वो कितना आएगा, मतलब मेरी कार में 4 लीटर्स आएगा। हाँ। और अगर मैं 4 लीटर से इस तरफ चलना शुरू करूं, तो मतलब आफ्टर 6 किलो, मतलब ऐसा हम मान सकते हैं, एक यूनिट मान सकते हैं, वी आर नॉट कंसिडरिंग लीटर्स और किलोमीटर्स वट एवर, हम एक ऐसा मान रहे हैं कि एक यूनिट एक लीटर 1 यूनिट तक चलेगा। ठीक है, मतलब अगर एक यूनिट पेट्रोल है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे 4 यूनिट्स ऑफ पेट्रोल है, तो ये 4 यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, 4 यूनिट्स ऑफ पेट्रोल है, तो जब ये इस तरफ चलना शुरू करेगा तो ये 4 यूनिट्स में ही आकर खत्म हो जाएगा, और इसके पास डिस्टेंस इसको कितना मिनिमम कवर करना चाहिए, 2 डिस्टेंस और कवर करना चाहिए इसको, हाँ। ताकि ये कुछ ना कुछ भरवा सके। तो दैट मीन्स यहाँ से तो मेरा शुरू हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो इधर ही नहीं जा पाएगा, तो पूरा सर्कुलर लूप करने की तो बात ही करते हैं। तो यहाँ से तो हम शुरू नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? हाँ। इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि हम 4,6 से शुरू क्यों नहीं करेंगे। क्लियर है। हाँ, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, उसके बाद अब हम नहाए कि यार अब हम देखते हैं कि हम यहाँ से शुरू कर पाएंगे कि नहीं। तो हमने यहाँ देखा कि मेरे पास 6 लीटर्स ऑफ पेट्रोल है, मतलब 6 यूनिट्स ऑफ पेट्रोल है और 5 यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस है। तो अगर मैं 6 यूनिट आगे अगर कवर कर लूंगी तो मेरे पास कुछ ना कुछ स्टॉक में रह जाएगा, मतलब हो मेरे पास जाएगा। 1 हाँ। यूनिट पेट्रोल का रह जाएगा। ठीक है, और जब मैं यहाँ पर पहुंच जाऊंगी फिर मैं देखूंगी कि अभी भी मेरे पास 1 यूनिट ऑफ पेट्रोल तो है ही, 7 यूनिट मेरे पास और आ गया है, और नेक्स्ट पेट्रोल पंप मेरे पास 3 किलोमीटर पर है, मतलब 3 यूनिट डिस्टेंस पर है। दैट मीन्स अभी मेरे पास जो इस मोमेंट पर जो पेट्रोल हो गया वो 8 यूनिट ऑफ पेट्रोल हो गया, क्योंकि 1 पहले था, 7 मुझे अब मिल गया। और जब मैं 3 और कवर कर लूंगी तो मतलब मेरे पास 5 यूनिट्स ऑफ पेट्रोल अभी भी भर जाएगा जब मैं इस पेट्रोल पंप पर आऊंगी। इतनी बात क्लियर है? फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पर आ जाऊंगी तो मेरे पास 5 यूनिट अभी बैलेंस में है। ठीक है, फिर 5 + 4 और मैंने ले लिया, 4 यूनिट्स ऑफ पेट्रोल और मैंने भरवा लिया अपने पास। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना? हेलो? हाँ हाँ, आ रहा है। ठीक है, तो 5 + 4 कितना हो गया, 9। अब 9 यूनिट्स ऑफ पेट्रोल के लिए मैं 5 यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस को तो आसानी से कवर कर ही पाऊंगी। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे जब मेरे पास 9 है, तो 9 के बाद मैंने 9 था, 9 के बाद 5 यूनिट डिस्टेंस मैंने चल लिया, तो मेरे पास 4 यूनिट्स ऑफ पेट्रोल बच गया। हाँ। तो 4 के बाद अब जो 4 लीटर्स मेरे पास पेट्रोल और आ गया है, दैट मीन्स 4 + 4 8, और मुझे अब नेक्स्ट कवर करना है 6, तो ये भी हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं 6 और 5 से शुरू करूँ तो मेरा पूरा सर्कुलर लूप कंप्लीट हो सकता है, और अगर मैं 4 6 से करूँगी तो नहीं होगा। वही होगा। हाँ। ठीक है, तो हमें यही इसी की वैल्यू बतानी है कि कैसे होगा। क्यू से करना आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं लगेगी। एल्गोरिथम मैंने शायद लिखा हुआ था इसका, हाँ एल्गो लिखा हुआ है, और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट और भी काफी सारे क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हुए हैं, इतना मुश्किल कोई भी नहीं है। ऑलमोस्ट सबके सब में जो जो कंसेप्ट लग रहे हैं वो डिस्कस कर चुके हैं हम। किसी में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, किसी में आएगी तो ग्रुप में लिख देना। ऑफिशियली मेरी तरफ से क्यू यहीं पर कंप्लीट होता है। क्यू में और तुम लोग अगर ढूंढोगे क्वेश्चंस तो शायद और नहीं मिलेंगे। आई थिंक आज हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं क्यू पर, और 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं 3 क्वेश्चन के साथ। तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो।
सात्विक अनम्यूट करो। हाँ मुझे कोई डाउट? नहीं, अभी तो नहीं, बट पढ़ना है और कुछ मतलब ज़्यादा लेंथी सी मीटिंग इस वजह से। हाँ मैं समझ पा रही हूँ। विंडो वाला क्वेश्चन हो गया क्लियर? हाँ, विंडो वाला मेरा clear हो गया। ये विंडो वाला पढ़ना एक बार जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हैं एक बार वो खुद करके देखना, जब तक खुद नहीं ट्राई करोगे वो नहीं होगा, ठीक है? और अर्पित, हाँ हाँ तो हाँ क्लियर। क्लियर है? वैसे उसका मैं एक सोच रहा था विंडो वाले में एक और चीज कर सकते हैं, जैसे कि अपन ने फर्स्ट वाला जो केक कॉलम था फर्स्ट वाला, उसमें तो आंसर निकाल लिया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जैसे नेक्स्ट विंडो में गए तो नेक्स्ट विंडो में हम रिवर्स आइट्रेशन बस एक इफ की कंडीशन चेक कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस है पहले तो उनका मतलब वो केक कॉलम के अंदर अंदर है या नहीं, जो मैक्स वाली वैल्यू है उससे। और अगर है तो उसके बाद में हम क्या कहते हैं, जैसे सारे के सारे स्टोर करवा के पॉप कराने की बजाय रिवर्स आइट्रेशन लगा के बस चेक कर लेते हैं कि कोई अगर मतलब मैक्स वैल्यू से कम है तो दिक्कत ही नहीं, फिर तो मैं दोबारा से वही वैल्यू को स्टोर करवा लेंगे। और अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि अच्छा जो एक बात बताओ। हाँ हाँ हम्म, समझ गई मैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो कि फ्रंट पर 10 था, हम्म, ठीक है, फिर फ्रंट के नेक्स्ट वाले पर 8 था, और वैल्यू जो अब मैं एंटर करने को बोल रही हूँ वो 9 बोल रही हूँ। तो अब मुझे इस मोमेंट पर मुझे 10 की तो ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम मुझे 9 की भी ज़रूरत है, बट मुझे 8 की कहीं ज़रूरत आगे पड़ेगी नहीं। तो जब मैं 9 को डाल रही होंगी अपनी DQ के अंदर, तो मैं किस हिसाब से डालूंगी? और मैं मतलब यहाँ पर ये वाली चीज़ को कंसिडर करने के लिए ऐसा किया गया है। एक बार दोबारा ना 10 10 तो है हमारे पास में, उसके बाद में 9 है, फिर उसके बाद में 8। हाँ नहीं रुको, एक काम करो, AGIO पर आओ। नहीं वो जो तूने सॉल्यूशन बताया नकुल, वो तो मुझे पता लग गया था। मैं वैसे सोच रहा था कि अगर हम हर हाँ बार रिवर्स हाँ हाँ, आइट्रेशन लगाएं। उसी का मैं कह रही हूँ कि देखो पहले सबसे पहले मान लो फ्रंट में 10 है, हम्म ठीक है, मतलब जो वैल्यू है 10 के बाद जो वैल्यू है, मतलब जो भी जिसका इंडेक्स स्टोर्ड है वो 8 वैल्यू है, हाँ ठीक है। और अब जो कंपेयर करनी है वैल्यूज, मतलब जिसके लिए हम लूप लगा रहे थे, उस वो वैल्यू है 9 वैल्यू। तो 9 के लिए अगर मैं बैक लगाऊंगी तो 9 को वो डायरेक्टली आफ्टर 8 पुश कर देगा, ऐसा कहना चाह रहे हो आप आपके मेथड में? 10 के बाद में अगर नहीं 10 के बाद 9 होगा ही नहीं ना, मैं यही तो कर रहा नहीं हूँ तो अगर 9 पुश नहीं होगा तो मुझे आगे तो 9 चाहिए हो सकता है। तो वो हम वापस देख लेंगे ना। मैं ये जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम वैसे तो डीक्यू का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, डीक्यू के कॉन्सेप्ट की जगह मैं एरे को ही कंसीडर कर रहा हूँ जिसमें मैं सीधा अच्छा वैल्यू स्टोर करवा लूंगा। हाँ जैसे मान अच्छा मैंने पहले के कॉलम्स है, पहले के कॉलम्स में मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, उसे मैंने फर्स्ट इंडेक्स 0th इंडेक्स में डाल दिया। उसके ठीक बाद है में मैं क्या करूंगा, के प्लस केथ इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको कंपेयर करूंगा मैक्स वैल्यू से। मतलब ठीक है 0 वैल्यू से अगर वो उससे छोटी है तो जो फर्स्ट इंडेक्स है उसमें भी वही वैल्यू आ जाएगी। और अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, के से लेके फर्स्ट इंडेक्स तक रिवर्स आइट्रेशन लगा लेंगे और वो वैल्यू फाइंड करके उसमें पुट कर देंगे, जैसे हमें कोई भी वैल्यू मिलेगी। मैं इस तरीके से सोच रहा समझ रही हूँ। हाँ ठीक है, कर सकते हैं, राइट। ठीक है ठीक है ठीक है, सही हो रहा है, हाँ कर सकते हैं, मतलब जो मैंने अभी तक देखा एग्जाम्पल से कर सकते हैं। हूँ। अच्छा गुड। ये वाला भी मुझे समझ आ गया, बस अभी यही देख लास्ट वो रह गया था जो पेट्रोल पंप वाला सर्कुलर टूर, बस वो देख रहा था। वो थोड़ा सा भी करूंगा तब पता लगेगा, बाकी आ गया सारी समझ। हाँ करना वो बस, टाइम एक्चुअली काफ़ी हो गया है तो अभी इसलिए मुझे हाँ हाँ सर्कुलर को मुझे समझाया नहीं, वरना सर्कुलर को काफ़ी अच्छे से समझाना था मेरे को, तो मैं समझा नहीं पा रही हूँ। बाकी मेरी तरफ से क्यों, अब तुम लोग ये देख लो, काफ़ी लोग लीव करके चले गए हैं, बट अभी मेरे को जितना बोलना है मैं वो बोलूँगी एटलीस्ट वीडियो में कि यार स्टैक हमने 7 सेशंस में किया था, कि वो हम दो दो सेशंस में ख़त्म कर रहे हैं। दिस इज़ जस्ट बिकॉज़ स्टैक के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे, देयर अराउंड 35 to 40 क्वेश्चंस ऑफ स्टैक,
और क्यू के तुम लोग जीएफजी पर क्वेश्चंस देखोगे तो 20 क्वेश्चंस है मैक्सिमम। ठीक है, 6 क्वेश्चंस पिछली बार हो गए थे, इस बार मैंने काफी 6 to 7 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में डाले हैं। और होमवर्क में भी कुछ ऐसा नहीं है, मतलब तुमने अगर जो आज 3-4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे उन 4 क्वेश्चंस को ठीक से कर लो, फिर उसके बाद कुछ रह नहीं जाएगा इन क्वेश्चंस में करने के लिए। तो इतने ही, मतलब 15 to 20 क्वेश्चन ही है क्योंकि और नहीं है। तो वो क्वेश्चन फॉर सारी मतलब वैरायटी शायद मैंने कवर कर ली है टॉपिक्स की भी, क्यू से रिलेटेड जो थे। तो मतलब मेरे हिसाब से क्यू यहीं पे ही खत्म है। नेक्स्ट सेशन से वील स्टार्ट रिकर्जन, बट आई एक्सपेक्ट दैट ये मैं जितने भी क्वेश्चंस हमने क्यू के करे, आई नो बहुत लोगों की प्रोक्रेस्टिनेशन रही है स्टैक के अंदर, एक की नहीं बहुतों की रही है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि जीएफजी पर जब मैं किसी की भी आईडी डालकर देखूं तो एटलीस्ट मुझे ये क्यू के 15 क्वेश्चन या जितने क्वेश्चंस भी हैं जिनके लिंक मैंने डाले हैं या जिनका एक्सप्लेनेशन मैंने क्लास में ली है, वो सारे सबके सबमिटेड हो वहां पर। आई विल चेक इट दिस टाइम। लास्ट टाइम इतना चेक नहीं किया था, काफी लोगों ने छोड़ दिया था, बट दिस टाइम आई विल चेक इट। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिकर्जन शुरू करने वाले हैं। थोड़ा टाइम तुम लोग को मिल रहा है, आई थिंक 2-3 डेज से ज्यादा ही मिल रहा है। मंडे या ट्यूसडे को लेंगे हम सेशन। तो बिफोर दैट यार, अगर एक क्वेश्चन भी एक दिन में कर लेते हो तो आज मतलब आज के बाद जितने दिन बचे हैं तो आई थिंक कवर हो जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन आज के होमवर्क में है वो हो जाएंगे। तो और जो भी डाउट हो यार ग्रुप में लिख दो, पर्सनल भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, भेज दो बस। ठीक है, बाकी मेरे को और भी चीजें डिस्कस करनी थी, बट आई थिंक आई नॉट बी एबल टू डिस्कस टुडे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।